Hi everyone, this is Dr. Amnaskar from Chemistry Department, Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. Today the topic we are going to discuss is 7 tools for quality control. This is actually the first topic of chapter 2 in the course of Analytical Chemistry for semester 4, BS semester 4. So let's start with the details of this topic. So, while starting for the discussion on 7 tools of quality control, we must know first of all that what do we mean by quality. So, the first thing we will discuss will be introduction to quality, that we will try to understand that what is the meaning of quality. And the second thing will be what is quality control, that once we have done with the concept of quality, then we will go towards the concept of quality control, right? And then the third step will be the tools for quality control. So the topic will be covered in 3 basic steps: quality, quality control, and then the tools for quality, and definitely then the detail for the tools of quality. While introducing to quality, you can say that the quality is describing how good or bad something is. It is actually the degree to which an object or an entity, the entity can be a product, it can be a service, it can be a process. So we are saying that our entity, our product, how much it is satisfying a specified set of requirements of the client. So the quality can also be defined as like that this is the degree to which a set of characteristics fulfill the already designed requirements. So in addition to this, we can say that when we are defining the quality, or we are introducing the quality is regarded as an important built-in feature of a product whose function is to fit one's needs, the client's needs, while showing no defects. This is an ideal situation, that it is the product is fulfilling all the needs or requirements or the attributes of our client, and it is showing no defects at all, right? And a plus point in the case of quality of the product is that the price has to be right. मतलब आपने जितनी भी चीज़, जो भी चीज़ आप मार्केट कर रहे हैं, उसकी जो प्राइस है वो उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. The price has to be right and the product may serve its designed lifespan. अब आपने अगर ये आप ये कह रहे हैं कि आप कोई ड्रग, कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है आपकी, आप आइबुप्रोफेन मार्केट कर रहे हैं, आप डिस्प्रिन मार्केट कर रहे हैं, आप कुछ भी मार्केट कर रहे हैं, तो अब आपने एक लाइफ स्पैन उसका डिज़ाइन किया है और आपने क्लेम किया है कि भाई जो आपकी पैरासीटामोल है इसका जो एक्सपायरी है वो 2 साल बाद है. तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको 2 साल तक, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके 2 साल तक उसको सर्व करना चाहिए. और अगर वो उससे पहले जो है वो अपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो लूज़ कर देती है, तो इसका मतलब है कि योर प्रोडक्ट इज़ नॉट सर्विंग up to the design lifespan. Another aspect of quality is that the product may show some favorable characteristics to the user other than the aim of the user to buy the product. अब ये एक additional है feature कि if you can give something extra to your client, that will be adding on to the term of quality. When all the mentioned measures are met within the product, it may be regarded as the quality product. That means you are marketing a product or a service which is excellent in every respect. So we will say that this product or this service is of very good quality. Quality control. What is quality control? Okay. Quality control is actually
it can be a procedure or it can be a set of procedures, and the intention of these set of procedures is to ensure that a manufactured product, if you are preparing or marketing a product, that a manufactured product or perform service, if you are providing a service, it adheres to a defined set of quality criteria. That is, the product or the service that is adhering or that is fulfilling the defined set of quality criteria which are required to be maintained. Or we can say this as well, that we are ensuring that the process of manufacturing or providing service, that is meeting the requirement of the client or the customer. अच्छा जी, तो क्वालिटी कंट्रोल को हम एक और तरह से भी डिफाइन, कैन बी डिफाइंड एज लाइक part of the quality management system. That is, quality management system is the system which is maintaining the quality from the step 1 to the last step. So it's the part of the quality management system which is focused on fulfilling the quality requirements. So in simple words, we can say that the quality control involves the testing of the units or the steps, testing of the units and steps, and what we are doing is we are determining if they are within the specification for the final product. जो भी हमारा final product है उस पे हमने जो भी specifications लगाई हुई हैं कि वो ये quality features को meet करेगा, तो during the process हम वो units और वो जो steps हैं उनको ensure करते जाते हैं कि वो उसी side पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. So the purpose of the testing is to determine any needs for corrective actions in the manufacturing process. मतलब अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है तो we will stop over there और हम उसको चेक करेंगे और हम चेक करके उसके करेक्शन करेंगे और उसको ठीक साइड पे लेके जाएंगे. Good quality control helps companies meet consumer demands for better products. Seven tools of quality control. Actually जब हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई सिंथेसिस कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हमें ये हो सकता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस वी आर फेसिंग सम ट्रबल्स और फॉल्ट्स और प्रॉब्लम्स. तो ट्रबल शूटिंग के लिए हम समटाइम्स हेल्प लेते हैं कुछ स्टैटिस्टिकल ग्राफिकल टेक्निक्स की, जो कि हमें ट्रबल शूटिंग में हेल्प कर देती हैं, जो भी क्वालिटी रेलेवेंट इश्यूज होते हैं उससे मुतालिक. तो वी हैव 7 different tools of the quality control. The first one is the checklist or check sheet. The second one is the histogram. Third is the Pareto chart. Fourth is the cause and effect diagram. Next is control charts. Next is scatter diagram. The last one is flow chart. These are the 7 basic tools for the quality control. अच्छा जी, तो पहली जो हम 7 क्वालिटी टूल्स में से हमने टूल को पकड़ा है वो चेक शीट है. तो चेक शीट इज़ एक्चुअली अ सिंपल डॉक्यूमेंट दैट इज़ यूज फॉर कलेक्टिंग द डाटा इन रियल टाइम. मतलब आप जब काम कर रहे हैं, जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप सिंथेसाइज कर रहे हैं, जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रियल टाइम जो भी है उस वक्त आप अपना डाटा साथ साथ कलेक्ट कर रहे हैं. एंड एट द टाइम वेयर द डाटा इज जनरेटेड, मतलब जैसे जैसे डाटा जनरेट हो रहा है साथ साथ आप कलेक्ट करते जा रहे हैं. ओके, द डॉक्यूमेंट इज टिपिकली अ ब्लैंक फॉर्म दैट इज डिजाइन्ड फॉर द क्विक, रिलायबल, easy and efficient recording of the desired information. Information किसी भी तरह की हो सकती है. जाहिर सी बात है, आप ये भी कर सकते हैं कि स्मूथली चल रहा है, किसी किस्म का कोई डिफेक्ट आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है तो उसकी वजह क्या है, मतलब किसी भी किस्म की आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपको डिजायर्ड हो कि आपको ये कलेक्ट करनी है, तो वो आप साथ साथ उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं. Data it captures can be quantitative, it can be qualitative. So you can have both type of data. When I'm saying quantitative, that means I am talking about that the number of the faults in the first hour were 2, in the second hour were 3. That means I'm giving the numerical values for some
some information. And when I'm saying qualitative, that means I'm saying in the first hour there was a fault, in the second hour there was no fault, in the third hour there were faults. अब मैं ये बता रही हूँ कि तीसरे घंटे में फॉल्ट्स थे, कितने थे ये मैं बात नहीं कर रही, तो ये क्वालिटेटिव हो गया, ठीक हो गया। तो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है मेरा डाटा, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ओके अच्छा जी, when the information is quantitative the check sheet is sometimes called the tally sheet। हम इसे कभी कभार tally sheet भी कहते हैं अगर हमारा information जो है वो quantitative terms में हो तो। ओके चेक शीट इज इसके कुछ डिफाइनिंग फैक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। चेक शीट इज सिंपल डाटा रिकॉर्डिंग डिवाइस। It is meant for the systematic record of data. Check sheet compiles data from the source directly. Quantify product defects if you are working on the defects. Quantify faults by location. You can quantify the faults. Quantify defects due to cause, किसी भी वजह से जो defects आए हैं आप उनको quantify कर सकते हैं. Track the activities of a process. So the check sheet is an entry door for the other quality control tools. Without data there will be no solution, hence it is important. हमने पहले ये कहा कि ये डायरेक्ट रियल टाइम लोकेशन जहाँ पे कि डाटा जनरेट हो रहा है वहाँ से डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, उसके बाद हमारे पास ये हो सकता है कि हम इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए या अपनी क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी अश्योरेंस जो हमारी टीम्स हैं उनके साथ हम इनको शेयर करने के लिए हम और टूल्स की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये पहला टूल है जो कि हम किसी जगह पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जो हमारी काफ़ी मदद कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये 7th जो स्लाइड है हमारी, इसमें हमने ना एक एग्जांपल कोड की भी है कि चेक शीट अगर हमने बनानी है तो हम कैसे बनाते हैं। हमारे पास पहले एक ब्लैंक पेज था, उसके ऊपर हमने एक साइड पे अपने जो हम डिफेक्ट्स का रिकॉर्ड लेने लगे। तो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव इनलिस्टेड द टाइप ऑफ द डिफेक्ट्स जो कि हमारे पास, ये हमने एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स की जो इंडस्ट्री है वहाँ की एक चेक शीट की एग्जांपल कोड की है। तो जी द फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज स्किप द स्टिच, टंका मिस हो गया, ठीक हो गया। सेकंड इज ओपन सीम, थर्ड इज पॉइंट अप डाउन, नेक्स्ट इज डर्टी स्पॉट आ गया कहीं पे, नेक्स्ट इज के प्लीट्स में कुछ आगे पीछे हो गया वो ठीक नहीं। अच्छा, और उसके बाद हमने टोटल अगर वर्किंग आवर्स 5 थे तो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने अपने दूसरे साइड पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल साइड है उस पर हमने फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन द टोटल। ओके नाउ अब इसका तरीका क्या क्या होता है ये इसको चेक शीट को बनाने का कि हम पहले डिफेक्ट पे हम एक वर्टिकल लाइन देते हैं, दूसरे डिफेक्ट पे दूसरी वर्टिकल लाइन, तीसरी वर्टिकल लाइन, चौथी वर्टिकल लाइन और पांचवें डिफेक्ट पे हम चौथी वर्टिकल लाइन के टॉप से पहली वर्टिकल लाइन की बॉटम की तरफ एक लाइन खींच देते हैं। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगर छठा हमारे पास डिफेक्ट आया तो हम उसको क्या करते हैं कि हम फिर एक से दोबारा से वर्टिकल लाइन देनी शुरू कर देते हैं 1 2 3। तो अगर आप पहले वाले बॉक्स के अंदर देखें जहाँ स्किप स्टिच है फर्स्ट आर के नीचे, तो you can count that 1 2 3 4 5 6 7 8, that means there are 8 defects of skip stitch in the first hour. Okay, in the second hour again these are 8, in the third hour you can see that 1 2 3 4 5, total 5, so the number is decreased. In fourth hour 1 2 3 4, the number is further decreased, and in the fifth hour 1 2 3 number is further decreased. And if at the end of the 5 hours if you are willing to count the total number of the defects which are there with reference to the skip stitch, the total number is, if you want to count you can count the total number is 28. इसी तरह से जो नेक्स्ट है ओपन सीम उसका उन्होंने दिया हुआ है, फिर उस अगले का दिया हुआ है, अगले का दिया हुआ है, अगले का दिया हुआ है। तो टोटल 5 घंटों में हमारे पास टोटल 5 तरह के डिफेक्ट्स हैं। उन 5 तरह के डिफेक्ट्स कितने आए हैं, किस घंटे में ज़्यादा आया, किस घंटे में कम आया है और टोटल कितने आए, वो सारा रिकॉर्ड हमें बिल्कुल क्लियर यहाँ पे जो है ना हमारी चेक शीट जो है वो बहुत अच्छे से बता रही है।
Now, the histogram. Histogram is actually a diagram or a graph which is consisting of rectangular bars. And when we are talking about the bars, the area of the bar will be proportional to the frequency of the variable, and the width will be equal to the class interval. यानी इसका मतलब ये हो गया कि histogram is a bar graph like representation of data that buckets a range of outcomes into columns along the x-axis. x-axis के along आप चलते जाएं तो आपको columns नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया. अब y-axis पे क्या है? The y-axis represents the number count, or if you are using percentage, then the percentage of occurrences or the frequencies in the data for each column. यानी हर कॉलम के लिए जो भी आपका नंबर काउंट है या जो भी अगर आप उसको परसेंटेज में डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं किसी भी फॉल्ट को या किसी भी वेरिएबल को, तो वो जो नंबर काउंट है या जो परसेंटेज है वो आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है आप उसको शो कर देते हैं. अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो मेरा बार ग्राफ है उस हर बार ग्राफ एक एक बार को पकड़ते जाएं और आप उसको देखते जाए तो उसका जो एरिया है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल. अब इस दैट मीन्स मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी एरिया, लेसर द फ्रीक्वेंसी लेसर विल बी द एरिया. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द width of the bar graph, that is actually equal to the class interval. So if you have a big data, then definitely the class interval for each bar will be bigger, and if you have lesser data, smaller data, then the class interval will be smaller, right? So it is the histogram is a graphical display of data using bars of different heights. Now the heights depends upon the frequency of the data. More the frequency, more will be the height and more will be the area. So taller bars show that more data falls in that range. Okay. So a histogram displays the shape and spread of continuous sample data. Now if I'm using a histogram, तो क्या कब हम histogram को use कर सकते हैं? The first thing is the data is or should be numerical. Now if you have qualitative data, no, you cannot apply that data and you cannot use the histogram for the qualitative data. So the data should be numerical, the data should be quantitative. The first thing is. Now the second thing is that if you want to see the shape of the data distribution कि अपने data को distribute किया और किस तरह की shape बन रही है, किस तरह की उसका जो भी उसके outcomes हैं वो क्या आ रहे हैं, वो किस तरह के आ रहे हैं, और उसको अगर सप्लायर देखना चाहे उसके लिए या आप खुद उसका रिकॉर्ड रखना चाहे उसके लिए, तो उसके लिए आप इस डाटा को यूज़ कर सकते होते हैं हिस्टोग्राम की फॉर्म में. यू वांट टू सी द शेप ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन. एनालाइजिंग वेदर a process can meet the customer's requirement. अब आपने एनालाइज करना है और आपने हिस्टोग्राम जो है वो प्लॉट कर दिया, आपके सामने बार्स आ गए. अब आपने एक स्पेसिफिक फर्ज करें कोई आप ये चाह रहे हैं कि इस लिमिट तक जो है ना वो किसी फ्रीक्वेंसी को जाना चाहिए, तो आपने प्लॉट किए में तो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में या डिफरेंट डेज पे या डिफरेंट जो है वो लोगों के अपने किए में, और आप ये देख रहे हैं कि फलाने वर्कर का जो वो है जो भी उसने काम किया है या जो भी सर्विस प्रोवाइड किया है या जो भी उसने सिंथेसाइज किया है या जो भी उसने मैन्युफैक्चर किया है, वो वाला जो उसका काम है वो यहाँ तक जा रहा है, इतनी उसको मीट कर रहा है. तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से वर्कर ने कैसा काम किया है, या एक वर्कर ने मुख्तलिफ घंटों में जो काम किया है उसको अगर आप कंपेयर भी करना चाह रहे हैं. सीइंग वेदर अ प्रोसेस चेंज has occurred from one time period to another. ये अभी मैंने डिस्कस किया, यानी एक ही वर्कर अगर काम कर रहा है तो एक टाइम इंटरवल में उसने कुछ किया और दूसरे इंटरवल में उसने कुछ काम किया, तो क्या वो कोई वेरिएशन है, उसमें कोई चेंज है, और अगर है तो वो हमारा जो हिस्टोग्राम है वो हमें क्लियरली बता देगा. Determining whether the output of two or more processes are different or same. ठीक है, यानी अब ये जो इसमें सेकेंड लास्ट पॉइंट है स्लाइड का, उसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास कोई प्रोसेसेस थे, कोई 2 प्रोसेसेस हैं, कोई 3 प्रोसेसेस हैं, और उनको आप कंपेयर कर रहे हैं, तो उनका कंपैरिजन में उनके जो आउटपुट्स हैं वो सेम आए हैं या डिफरेंट आए हैं, तो वो भी आपको हिस्टोग्राम उसमें आपकी हेल्प कर सकता है. एंड इफ़ यू
wish to communicate the distribution of data quickly and easily to others, तो हिस्टोग्राम जो है ना ये एक बड़ी अच्छी हेल्पफुल चीज़ है, ये आपकी हेल्प कर सकता है बिल्कुल। अच्छा जी, ये अब जो हमारे पास 9वीं स्लाइड है, इसमें हमने एक हिस्टोग्राम प्लॉट किया हुआ है और हम उसको थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि ये किस तरह के बार ग्राफ्स हैं। तो अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमने डिफेक्ट्स पर आर प्लॉट किया हुआ है और यानी घंटे हैं इसमें ना। अच्छा जी, वो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से हमने प्लॉट किया हुआ है। और वाई एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी डिफेक्ट्स की जो कि आई है, और वो हमने 5-5 का उस पे इंटरवल पे उसको हमने जो है वाई एक्सिस पे मार्क किया हुआ है। अब अगर आप पहले देखें तो पहले घंटे में देयर इज नो डिफेक्ट, दूसरे घंटे में अगर आप देखें देयर इज जस्ट वन डिफेक्ट। उसके बाद लुक एट द थर्ड आवर, एंड इन द थर्ड आवर you can see almost 16 number of defects in that hour. In the next 4th hour, the number is again decreased. So this is the graphical representation in the bar form, where you have plotted the defects in manufacturing process, और ये आपने टाइम के अगेंस्ट इसको डिफेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी को टाइम के अगेंस्ट आपने प्लॉट किया हुआ है, और बड़ी क्लियर नीट पिक्चर आपको इससे हिस्टोग्राम से मिल रही है। तो हिस्टोग्राम इज क्वाइट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर ऑफ अ प्रोसेस एट सम टाइम। Pareto charts. Now, while discussing the Pareto charts, let's define it first. A Pareto chart is a graph that indicates the frequency of defects as well as their cumulative impact. Actually, a Pareto chart is a bar graph. Again, a bar graph. The lengths of the bars will be representing the frequency. ठीक हो गया? Frequency और cost or the time, the deciding factor, and are arranged with longest bar on the left side. मतलब आपका जब ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले जो बार होगा that will be the longest one and shortest to the right, और जैसे जैसे आप राइट को चलते जाओगे छोटे होते जाएंगे। अच्छा, in this way the chart visually depicts which situation is more significant. ठीक हो गया? यानी इसका मतलब हो गया कि Pareto charts are useful to find the defects, to prioritize in order to observe the greatest overall improvement or more affecting situation. आपने अपना जो Pareto chart है, बार ग्राफ है, उसमें आपने प्लॉट किया है। प्लॉट इस लिहाज से किया है, आपके लेफ्ट साइड पे जहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, वहाँ पे जो बार ग्राफ होगा वो सबसे जो टॉलेस्ट होगा वो आएगा, और उससे जैसे जैसे आप राइट को चलते जाएंगे छोटे होते जाएंगे, और प्लस दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो फैक्टर है डेट विल बी इन द स्टार्ट, और एंड पे जाते जाते जो जिनका इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम है वो लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे, सॉरी राइट की तरफ जाते जाएंगे। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया कि पेरेटो चार्ट जो है वो आप यूज़ कब कर रहे होते हैं? एक्चुअली जब when you want to analyze the data and you want to analyze the data with reference to the frequency of the problems or causes in the process, and you want to decide that which factor, which problem, which cause is more significant, or I must say most significant. When again you want to analyze broad causes by looking at their specific components, और आप ये देखना चाह रहे हो कि उसमें क्या components हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया? सही हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि again coming to the Pareto chart or the Pareto diagram, we will say that this is a diagram which will indicate that which problem is to tackle first. और ये हमने कैसे डिसाइड किया? ये हमने ऐसे डिसाइड किया क्योंकि हमारे सामने पेरेटो चार्ट बना होगा, और पेरेटो चार्ट में सबसे जो इन्फ्लुएंशियल जो कॉज है वो
बिल्कुल स्टार्ट में आ गया है। तो हम ये कहते हैं कि जी Pareto diagram indicates which problem to tackle first by showing the proportion of the total problem that each of the smaller problem comprise. अच्छा जी, this is based on the Pareto principle, which is actually that 20% of the sources cause 80% of the problem. अभी जब हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं स्लाइड पे, तो उस पर पेरिटो चार्ट बना हुआ है एक, तो आपको मजीद इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी होपफुली इंशाल्लाह. So let's go to the next slide. Okay, now if you look at the Pareto chart, this example, you can see that there are some factors which are given as the x-axis. On the y-axis, on the one side of the graph, you can see the left side, the frequency is given, that is 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, and 86, okay, and onwards. Or on the right side of the graph, the percentages are given: 0, 20%, 40%, 60%, 80%, and 100%. Okay. Now you can see that there are some bars in the graph and a line graph, a line as well, a line graph as well. अच्छा, अब इसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपने आपके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो आपने प्लॉट किए, और आपने पहला फैक्टर जब सेटअप वाला प्लॉट किया तो वो ये 40, उसकी फ्रीक्वेंसी 40 से कुछ कम है. लेकिन जब आपने इसको ओवरऑल सारी जो भी आपकी टोटल फैक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसका आपने टोटल काउंट किया, तो वो टोटल का ऑलमोस्ट 41.9% बना. ठीक हो गया. सो आपने उसको प्लॉट किया और उसके बाद आपने कहा कि ओवरऑल इस जो परसेंटेज इसकी बन रही है, ये ऑलमोस्ट कोई 38 इसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है, लेकिन ओवरऑल जब आप इसकी क्यूमुलेटिव पिक्चर बनाते हैं तो उस क्यूमुलेटिव पिक्चर के अंदर इसकी जो परसेंटेज बन रही है वो 41.9%, ऑलमोस्ट 42% बन रही है. अच्छा जी, उसके बाद आप नेक्स्ट पे गए. नेक्स्ट आपका जो है वो आपने जो फैक्टर आपने दिया हुआ है कि आपका स्ट्रक्चर फेलियर. अच्छा, उसमें स्ट्रक्चर फेलियर में आपने उसको प्लॉट किया और वो ऑलमोस्ट कोई 19% है, लेकिन सॉरी 19 है उसकी फ्रीक्वेंसी. लेकिन जब आपने उस 19 को ओवरऑल टोटल में उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की, तो वो जो परसेंटेज है वो उस फ्रीक्वेंसी की जो परसेंटेज बनी वो ऑलमोस्ट जो है वो इतनी बनी कि वो आप 64 में से 42 माइनस करें तो ये ऑलमोस्ट कोई क्या बनेगी 22%. ठीक है. अच्छा, ये 22% ऑलमोस्ट बनी. और लेकिन हमने जो अपना सेकंड जो लाइन पे प्लॉट किया है वो हमने टोटल प्लॉट किया, यानी 42% प्लस 22%, और ये हम ऑलमोस्ट 64% पे चले गए. अच्छा, उसके बाद हम थर्ड पे आ गए हैं. हम डिलीवरी में हमारे पास जो भी फैक्टर्स जो हैं उन्होंने वो फॉल्स आए हैं, फेलियर्स आए हैं, वो जो है ना वो ऑलमोस्ट कोई ये जो है ये तकरीबन 16%, 14% 16-14 इसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है. लेकिन जब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज निकाला तो वो जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट को 16% के करीब आया, 15 पॉइंट कुछ % के करीब आया. तो हमने ये किया कि हमने परसेंटेज उसमें 64 में ऐड की और वो 79.1% आ गया. यानी अब नीचे हमारे पास बार्स चल रहे हैं और वो बार ग्राफ्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि इस वाले फैक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और ऊपर हमारे पास एक लाइन चल रही है लैता से, और वो लाइन हमें ये बता रही है कि पहला फैक्टर प्लस दूसरा फैक्टर कितना परसेंटेज बना, प्लस तीसरा फैक्टर कितना परसेंटेज बना, फिर चौथा फैक्टर कितना परसेंटेज बना. टोटल ये सारे फैक्टर्स का जो परसेंटेज है टोटल मिला के उसको डेफिनेटली 100% होना चाहिए. ठीक है ना. तो अब ये हो गया कि हमारे पास ये जो पेरेटो चार्ट है इसमें हमारे पास दो चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं. एक के डिफरेंट फैक्टर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमें वो भी बता रहा है ये, और प्लस ओवरऑल जो पिक्चर है कि टोटल जो इफ़ेक्ट्स हैं उनमें से, अब यानी इसका मतलब है कि हम ये कहते हैं कि हम पहले जो 2 हैं या पहले जो 3 हैं वो मिला के 80% बन रहे हैं.
ठीक है ना। पहले 2 जो है ये मिला के ऑलमोस्ट 65% बन रहे हैं और पहले 3 मिला के ऑलमोस्ट 80% बन रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि अगर हम पहले तीनों फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 80% डिफेक्ट्स हम वैसे रिमूव कर लेंगे, और बाकी के हमारे जो 4 डिफेक्ट्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं तो हम ऑलमोस्ट कोई 20% के करीब के जो है ना डिफेक्ट्स को वो रिमूव कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो और फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज आपके पास टाइम कम है और आप ये करते हैं कि आप कोई 3 जो हैं इफ़ेक्ट्स वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें, ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं कोट कर रही हूँ। तो आप अगर पहले 3 को कर लेंगे तो आप अपनी क्वालिटी को 80% पे सीधा आराम से ऑलमोस्ट जो है ना वो लेके जा सकेंगे। ठीक है, 80% आपने इम्प्रूव कर दिया, आपने इन तीनों डिफेक्ट्स को अगर कंट्रोल कर लिया तो पेरेटो चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट tool for quality control and quality, or this can help you in deciding that which uh, factor is more important, और किसको आप पहले फोकस करें और किसको आप बाद में फोकस करें। ठीक हो गया जी। Now the next tool we are going to discuss for improving the quality of our system is cause and effect diagram. Now, cause and effect diagram is also known as fishbone diagram. It is also known as Ishikawa diagram. Now, this is actually this diagram helps to identify in identifying possible causes for an effect or a problem. That means if you are facing a problem, if you are seeing some effect in a process, or you are finding some defect in a problem in a process, and you want to identify that what are the possible causes for that effect or that problem. The Ishikawa diagram or fishbone diagram or the cause and effect diagram, this is helpful. This is very helpful in this, right? So cause and effect diagram is also known as fishbone diagram. Fishbone is a term used since it resembles one with long spine and connecting branches. मछली की लंबी स्पाइन जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और उसके बाद उसके कनेक्टिंग ब्रांचेस जो उसके स्पाइंस होते हैं उससे रिजेंबल करती है ये डायग्राम, तो इस वजह से हम इसको फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। अच्छा जी, द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम शोन हेयर इन द स्लाइड हैपन्स टू हैव 6 ब्रांचेस। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे स्लाइड में जो बनाई है इसके 6 ब्रांचेस बनाई हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि 6 ही हों। यूजुअली हम 6 बनाते हैं। वो 6 क्यों बनाते हैं? क्योंकि दिस वन एक्चुअली इट इज़ कन्वीनियंट टू हैव द चार्ट कोइंसाइड विद द 6 एम्स। अब 6 एम्स क्या क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ मैन, ठीक हो गया, यानी कि द वर्कर। The second is machine, the third is material, the 4 is method, the 5 is measurement, and the 6 is mother nature. That all 6 possibly affecting factors in a process or in synthesis or in production. These are given and these are named as 6 M's. But yes, you can decrease the connecting branches in the diagram, or you can even increase the connecting branches in a diagram. It depends upon your requirement. Okay ji? Now let's start with the control chart. A control chart is a graph mainly derived from a normal distribution curve. Okay, the y-axis on the chart denotes a quality characteristic of the product or the process, whichever you are working on, which is controlled and will be given in the units. अब units कौन से वाले? जिसमें आपकी एक टेस्ट वैल्यू होगी जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, और वो टेस्ट वैल्यू जिन यूनिट्स में होगी उन्हीं यूनिट्स के अंदर क्या है कि आपकी वो जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्ट की या प्रोसेस की वो दी गई होगी। ठीक हो गया, ये तो हो गया वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के ऊपर आपका क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आप जिस पे कि आप बात करना चाह रहे हैं, जिसको कि आप चेक करना चाह रहे हैं। ओके, अब एक्स एक्सिस विल कंसिस्ट ऑफ टाइम इंटरवल और सैंपल नंबर, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ऑन एक्स एक्सिस व्हाट यू विल हैव आइदर इट विल बी टाइम
इन इंटरवल्स, और द सैंपल नंबर, कितने सैंपल्स आपने रन किए हैं, तो वो सैंपल नंबर भी हो सकता है। ओके अच्छा, जब आप क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कंट्रोल चार्ट्स को देख रहे होते हैं, तो यूजुअली व्हाट वी हैव अ सेंट्रल लाइन, एंड द सेंट्रल लाइन इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एवरेज ऑफ द वैल्यूज of the studied matter or the quality or the characteristic, and this may also indicate the nominal value। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये या तो आपकी जो है ना वो जो सेंट्रल लाइन है वो आपकी एवरेज वैल्यू को डिस्क्राइब करेगी, या फिर आपकी नॉमिनल वैल्यू को डिस्क्राइब करेगी। और नॉमिनल वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, विच इज द ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज द वैल्यू। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ शेयर, तो वैल्यू ऑफ अ शेयर व्हेन इट वाज इशूड, ठीक हो गया, यानी जब वो स्टार्ट हुआ था। या अगर आपके पास कहीं से उसकी एवरेज वैल्यू कोई मौजूद है तो वो भी हो सकती है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो है, एवरेज वैल्यू जो सेंट्रल लाइन है, वो एवरेज वैल्यू भी हो सकती है और वो नॉमिनल वैल्यू भी हो सकती है। ओके अब इसी कंट्रोल चार्ट के अंदर आपके पास एक रेड डॉटेड लाइन नीचे है जिसके ऊपर के लिखा हुआ है लोअर कंट्रोल लिमिट, और एक लाइन ऊपर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अपर कंट्रोल लिमिट। तो हम जो अपर कंट्रोल लिमिट है उसको यूसीएल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लोअर कंट्रोल लिमिट है उसको हम एलसीएल से रिप्रेजेंट कर सकते होते हैं। अच्छा, अब ये जो लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट्स हैं, ये मेरे पास कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करते हुए कहाँ से आएंगे, मेरे पास अगर कोई हिस्टोरिकल डाटा मौजूद है, हिस्टोरिकल डाटा मीन्स अ डाटा which I have from the experiments or from the processes or the synthesis which I have done in past। ठीक है, पिछले दिनों में या पिछले महीनों में या पिछले हफ्तों में मैंने कोई काम किया है, या मैंने लिटरेचर सर्वे किया और वहाँ से मैंने कोई डाटा कलेक्ट किया, और उसमें मेरे पास एक ये वैल्यूज आई हैं कि जो लोअर लिमिट है वो मैक्सिमम कहाँ तक गई हुई है जो कि एक्सेप्टेबल है, और अपर लिमिट कहाँ तक मैक्सिमम गई हुई है जो कि एक्सेप्टेबल है। तो उसके ऊपर बेस करके, उन डाटाज के ऊपर बेस करके व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ड्रॉन अ लोअर कंट्रोल लिमिट लाइन एंड अपर कंट्रोल लिमिट लाइन। तो अब ये मैंने प्लॉट कर दी। उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरे पास व्हाट आई हैव डाटा इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट or in the present process or procedure or service। So what I have done is I have plotted that value data on the line which is the average output line or the central line। ठीक हो गया। अब जब मैं डाटा को प्लॉट कर रही हूँ तो ये होता है कि मेरे पास आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं जो इस स्लाइड के ऊपर दी हुई है कि पॉइंट्स जो हैं वो सेंट्रल लाइन के ऊपर नीचे आ रहे हैं, और वो अपर कंट्रोल लिमिट से नीचे हैं और लोअर कंट्रोल लिमिट से ऊपर है। अगर कोई डाटा पॉइंट जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर जाता है या लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे जाता है, तो हम उसको आउटलायर बोलते हैं, और उसको हम यूजुअली स्किप कर देते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। या फिर ये कि अगर वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर हम ये डिटर्मिन करते हैं कि ये क्यों इतना, हमारी जो एवरेज वैल्यू है या जो नॉमिनल वैल्यू है उससे इसने इतना डेविएट क्यों किया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस हम ये डिसाइड कर सकते होते हैं कि हमारे लिए आउटलायर कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको हमने इग्नोर करना है या हमने उसके ऊपर काम करना है और डिसाइड करना है कि क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं उसके ऊपर या नीचे जाने के। अदरवाइज हमें एक सीक्वेंस नज़र आ जाता है इस कंट्रोल चार्ट से, और उसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो डाटा है वो एवरेज लाइन के कितना करीब है। और डेफिनेटली अगर हमारी नॉमिनल वैल्यू या एवरेज वैल्यू जो है वो अगर हम ये मान लें कि वो हमारी ट्रू वैल्यू है, तो उस ट्रू वैल्यू के जितना करीब होगा उतना यानी हमारी डाटा की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। Next, the tool which we are going to discuss is the scatter diagram. A scatter diagram shows the correlation between two variables in a process. So again, this will be a graph in which the values of two variables. Now I have a process where I have two variables, and I need to know that what is the relationship between the two variables and whether one variable is affecting the other or not, और कोई रिलेशनशिप है उनमें या कोई रिलेशनशिप नहीं है।
क्या उनका आपस में एक दूसरे पे इफेक्ट है, मुझे अगर ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है और ये सब चीज़ें देखनी है और ये सब चीज़ें जाननी है, तो द स्कैटर डायग्राम इज द बेस्ट आंसर to this. So a graph in which the value of two variables are plotted along the two axes and the pattern of the resulting points revealing any correlation present. राइट. सो द स्कैटर डायग्राम पेयर्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, आपके पास जो भी न्यूमेरिकल डाटा है आप उसको पेयर अप कर लेते हैं और उसके बाद वन वेरिएबल जो है आप एक एक्सिस पे ले लेते हैं और दूसरा वेरिएबल दूसरे एक्सिस पे ले लेते हैं और उसके बाद आप उसका रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं टू लुक फॉर अ रिलेशनशिप बिटवीन देम. इफ द वेरिएबल आर कोरिलेटेड the points will fall along a line or a curve, right? So the better the correlation, the tighter the points will hug the line. Now the line can be a positive and or negative or linear भी हो सकती है, non linear भी हो सकती है. Different हमारे पास relationships हैं. You can see in the diagram that in the first one that is the positive and linear. वो positive है, दोनों एक दूसरे के साथ grow कर रहे हैं, plus linear है, a straight line है. The second दोनों एक दूसरे के साथ decrease कर रहे हैं, so this is negative and linear. In the third you can see that this is negative वो और उसके साथ वो नॉन लीनियर है और चौथी वाली जो है उसमें यू कैन सी देयर इज नो रिलेशनशिप, राइट. सो नाउ some fine details about the scatter diagram in this slide. So the scatter diagram is used to find the correlation between the two variables, how they are related. After determining the correlation, you can then predict the behavior of the dependent variable based on the measurements you have done regarding the independent variable. So definitely from this discussion you can understand that there will be a dependent variable and there will be an independent variable. And usually what we do is we take the independent variable on the x-axis and the dependent variable on the y-axis. We will plot and we will see that how the dependent is depending on the behavior of independent variable, right? So coming to the fourth line, according to the correlation, you can divide the scatter diagram into the following categories. Number one category for the scatter diagram is the scatter diagram with no correlation. If you remember the previous slide, the last diagram given in the scatter diagram is the diagram where we seen there was no correlation in the diagram, and in now the second point is the scatter diagram with moderate correlation. अच्छा, अब अगर दोनों आपस में कुछ रिलेट कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर रहे, तो इन दैट केस वी विल से दैट द स्कैटर डायग्राम इज शोइंग रिलेशनशिप विद मॉडरेट कोरिलेशन, राइट. द थर्ड पॉइंट इज स्कैटर डायग्राम विद स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन. अच्छा, अगर आपको प्रीवियस स्लाइड की पहली, दूसरी और तीसरी याद है, तो एक पॉजिटिव लीनियर थी, एक नेगेटिव लीनियर थी, एंड द थर्ड वाज नॉन लीनियर negative, sorry. But they had a strong correlation. The points, the data points were very closely placed on around the lines, right? So that was a strong correlation scattered diagram. Now the next paragraph on this slide is scatter diagrams are useful to determine the relationship between the two variables, as we have discussed earlier. This relation can be between two causes. Now the two variables can be two causes in a process or a cause and an effect, right? तो ये भी हो सकता है कि दो causes को आप डिस्कस करें कि किसी प्रोसेस में कोई चीज़ गड़बड़ हुई है, कोई फॉल्ट आया है, तो हमारे पास टू पॉसिबल कॉजेज है. फॉर एग्जांपल, एक ये कि टेम्परेचर बहुत शूट कर गया था और प्लस ये कि हमने उसको टाइम ज़्यादा दे दिया. तो अब ये दो पॉसिबल कॉजेज हैं, तो हम इनको रिलेट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि क्या टाइम का इफेक्ट था टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का इफेक्ट था टाइम पे. तो दो पॉसिबल कॉजेज और अ कॉज एंड इफेक्ट. और ये कि फ़र्ज़ करें टेम्परेचर ज़्यादा होने से
हमारा जो कोई भी सिंथेसिस का प्रोसेस था वो बहुत तेज़ हो गया, या टेम्परेचर बहुत कम होने से सिंथेसिस का प्रोसेस बहुत स्लो हो गया। तो अब कितना टेम्परेचर शूट किया तो कितना जो रिएक्शन रेट है वो तेज़ हो गया, और हमें कितना रखना था और कहाँ से आगे हमें हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो कॉज एंड इफेक्ट भी हम इस स्कैटर डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं. It can be positive, it can be negative, or no relation at all. Yes, we have discussed it earlier. The first variable is independent, and I told you that this variable you will be taking on the x-axis, and the second variable will be dependent on the first one, and it will be taken on the y-axis. Okay. To analyze the pattern of the relation, you change the independent variable and monitor the change in the dependent variable. This is the usual pattern whenever you are relating the two variables or two factors or two causes. The normal pattern of the study is that you change the independent and you see the effect on the dependent, and by this you can get a nice clear picture of the scenario. Okay. Next one is the flowchart. Okay. Flowchart is a graphical representation of a logic sequence work or a manufacturing process. So this is a type of diagram that represents a workflow or a process flow, right? From where we are starting, from where we are passing through or going through, and on what point, at what point we are going to end. So this is a logical sequence of the workflow or the process flow, which we can call the flowchart. Okay, a flowchart is a picture of the separate steps of a process. So if you are going through a process, the flowchart will be a picture which will be clearly indicating that these are the steps for this process in a sequential order. That means you will start from the first step, you will go to the second step and the third and the fourth and the fifth to the last one. It is a generic tool that can be adopted for a wide variety of the purposes, and can be used to describe various processes such as manufacturing process, an administrative process, or a service process, or a project plan. Even in analytical chemistry, when we are dealing with the different techniques, analytical techniques, for example, if we are talking about the spectrophotometer, we use the flowcharts to tell that in the spectrophotometer we start from the light source, we go to the monochromator, then to the sample. That means we have a proper sequence of the steps, and that sequence of the steps makes the picture very easy and nice to understand, and we can have a clear idea that this is the first step and this is the last step, and these are the intermediate steps, right? So the next line in the slide is elements that may be included in a flowchart are a sequence of the actions, materials or services. जो भी आप कर रहे हैं, मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कोई synthesis कर रहे हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका एक सीक्वेंस तो होता है ना, तो वो सीक्वेंस आप बता रहे हैं are a sequence of actions, materials or services entering or leaving the process. Inputs क्या हैं, outputs क्या हैं. Okay, decisions that must be made, people who become involved, time involved at each step, and or process requirements. ये सब चीज़ें इसके अंदर important होती हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब to develop understanding of how a process is done, ये इसमें flow chart में हमारी help करता है. To study a process for improvement, okay, to communicate to other how a process is done, when better communication is needed between the people involved with the same process, to document a process when planning a project. तो उसमें भी आपकी ये हेल्प कर देगा फ्लो चार्ट जो है वो डिसाइड करने में कि आपने प्लान करना है प्रोजेक्ट, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और आपने कहाँ पे एंड करना है. Now this is an example of flowchart. So the starting point is that you want to order a burger.
at some burger shop, and the next thing is that you need fries. Fries चाहिए आपको? Yes, order the fries as well. Okay, and if you don't need fries, then you will say no. Okay, want drink? If you want to have drink with the burger, okay, order the drink. ठीक है? Or if you don't need a drink, no. Okay, pay to the cashier for whatever you need, burger plus fries plus drink, or burger plus fries, or burger plus drink, or only the burger. Pay to the cashier, okay, and take your burger. Enjoy, have fun. Okay ji, now after such a long and um, comprehensive, I must say comprehensive, comprehensive presentation on, or lecture on the quality and the 7 tools of quality for quality, you must be having some assignment. थोड़ा check तो करें ना कि आपको कुछ समझ आई कि नहीं समझ आई. तो the question number 1 is why a quality control plan is important in a process. What if we don't make a quality control plan? So what will be the benefits if we are making answer the question, right? And the question number 2 is differentiate between histogram and Pareto chart. You have gone through the histogram, you have gone through the Pareto chart. They are very close to each other, but they have some differences. So what are the differences? Please make this clear. Thank you very much. All the best.